Hello friends, today we are going to start with the kingdom Protista. As you seen on this सबसे पहला हम लोगों को प्रोटिस्टा के अंदर एक ही ऑर्गेनिजम्स है वो easily याद रहता है because it was already studied in the standard 10th, and that is amoeba. It having a irregular shape, unicellular organisms and prominent nucleus they have, and single cell perform all the activities. So here in this video I'm going to summarize the whole kingdom Protista, and then later on we will see every points in a detailed one. So here in this one, the center one is showing amoeba having दूसरा बाजू में है यूग्लिना विरिडिस डाइनोफ्लैजुलेट्स, एंड यहाँ पे एंटामिडा हिस्टोलाइटिका है. देन दिस इज द टेट्रा Chimina, that is a red blood cells. This is the Trichomonias or Trichonympha, that is present in the liver in the gut of the termites. And this is the Trypanosoma gambiensis that causes the African sleeping sickness. Okay, so let us see the next one. What is showing in this kingdom Protista? Protista means they are the defined as what they are not. So eukaryotes that are not plants, animals or fungi means they are having a very well developed nucleus covered with the nuclear membrane. Scientists believe that they were the first eukaryotic organisms है. Most are unicellular, मतलब they having a well developed nucleus along with the cytoplasmic organelles within them, but still they are having or they possessing a unicellular body. Algal or algae within that it is exceptional. Many are aquatics, very diverse kingdom means having many varieties within this kingdom Protista. And the evolutionary tree, if we see, then the this evolutionary tree mainly branch into two. One is the ancient bacteria, which is unicellular but having a prokaryotics or primitive nucleus. Eukaryotics, एंशियंट के बाद में डेवलप होने वाले यू बैक्टीरिया, दैट इज़ ऑल्सो यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स. प्रोटिस्टा is having a eukaryotes, unicellular or multicellular. And onwards when we move from Protista onwards, so that is divided into fungi, animals and plants. Rest of other than or after the bacteria all are unicellular and multicellular. Beyond the Protista all are multicellular and eukaryotics. Protista are unicellular but having a eukaryotic means well developed nucleus within them. So that is the basic difference among them. Animal like which characters they have in the Protista, so they are heterotrophic mode of nutrition they are showing, means they are depend on others for the need or for the requirement of the foods. They are distinguished how they move, or they have the flagella. It is a flagella means it is a tail like structure. With the help of it can move easily. They're having a false foot, or you can say pseudopodia like in amoeba. So with the help of that it can move very easily. If we talk about the flagella, तो flagella euglena have flagella to move. Single or one or two number में होते हैं. Whip like movement से they are moving. Pseudopodia in amoeba, you can say, that have the false foot, and with the help of the extension of the cytoplasm within any one area, they can cause the fit-like structures. Cilia, it is a tiny hair-like structures that cover the whole body. They talk about the paramecium, and with the help of the cilia, they are moving. And some of them are immobiles, means they are stationary or they are sessile. They are living with adherence or with attached the substratum. Okay, so somewhat they have the characteristic like animals because they are moving. Okay, so they are motile. Here the sarcodines we talk about. Animal like protists use pseudopod to feed and moving, like they are showing amoeba. This is the whole structures of the amoeba, having a pseudopodia, having a food vacuoles. So in the direction of the food they are just forming a false food and close the food particles within them. They have the prominent nucleus. They have the endoplasm as well as ectoplasm. They have the contractile vacuoles too. This is the ciliates.
So animal like protist use the cilia for feeding and movement. So paramecium is the best example which have the cilia which cover their whole body. So it is the body of the paramecium. I am just revising all the names. Their whole bodies with cilia. Trichocyst, they have canal of contractile vacuoles, food vacuoles, large nucleus, माइक्रो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं उसके पास, एक साइज़ में बड़ा होता है उसको मैक्रोपी बोल सकते हैं, एक साइज़ में छोटा होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द माइक्रो न्यूक्लियस. दे हैव द ओरल ग्लूज, दे हैव द गुलेट, ectoplasm and endoplasm. Okay, then this is the zooflagellates. They are mobile, so they are zoo, and locomotory organ for them it is a flagella, so they are zooflagellates. The very first diagram they are showing, that is of the in human beings, these protista which cause the infection, plasmodium, they are also found in the human bloods. So animal like protists swim using flagella. So here the some example of the locomotory flagellates, that is the trypanosoma protist that spread by the bites of the tese fly cause African sleeping sickness. It is the most important, आपको याद रखना रहेगा. तैसी फ्लाई जो फैलाती है वो कौन क्या फैलाती है, ट्राइपनोसोमा प्रोटिस्ट को फैलाती है, जिससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वो होती है. द नेक्स्ट वन इज़ द जियार्डिया, कैन कंटामिनेट वाटर एंड कॉज अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. The third one is the trichonympha, lives in a mutualistic relationship with termites. मतलब टर्माइट्स के साथ वो लोग रहते हैं म्यूचुअलिटिक बिहेवियर के फॉर्म में. तो टर्माइट है वो शेल्टर देती है, और ये ट्राइकोनिम्फा है वो जो वुड के अंदर सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और इससे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है. सो दे गेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वुड पीस एंड शेयर अमंग देम, मीन्स टर्माइट और ये ट्राइकोनिम्फा दोनों शेयरिंग कर लेते हैं. सो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन देम. The next one is the sporozoans. Okay, so is the sporozoans, आपने नाम सुना होगा कि मोस्टली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करने से मलेरिया का फीवर होता है. ओके, तो ये मलेरिया है उसको कौन ट्रांसफ़र करता है, मॉस्किटो, एंड दैट इज़ अ फीमेल Anopheles mosquito. So female Anopheles mosquito is the vector, and this disease is caused by the Plasmodium. It is example of the sporozoans. So Plasmodium sporozoan that cause the malaria. Vector है female Anopheles mosquito, and it is transferred from or in between mosquito and the human beings. So they have the two hosts mainly, we can say. Okay, so they live as a parasite within the body of the human being, and it is responsible for the causing of the disease, that is a malaria. Here is the cycle of malaria or plasmodium life cycle. We'll see very in a depth or in a detailed one later on, but I'm just showing a diagram which is seen in your screen, that is having a many stages of the mosquito when it lays it when mosquito transfer this plasmodium within the human beings. So they have the trophozoids, merozoids, sporozoid stages, and in sporozoid form this stage which is present in the human being, this stage is going to be transferred within the mosquito when it is bite, और ये जो मॉस्किटो का बॉडी है दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर द स्पोरोजोइड्स विद इन द ह्यूमन बींग्स. इट इज़ ट्रांसफर टू द लीवर को एक बार इन्फेक्टेड करके उसका दूसरा टारगेट होता है आरबीसीज, और आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसको खाने का काम करता है ये जो स्पोरोजोइड्स है वो. That's why they are just destroying the red blood cells and decrease the amount of red blood cell. So चिल्ड फीवर ये इसके सिम्टम्स हैं. ओके, हाई फीवर, चिल्ड फीवर, पूरा बॉडी है वो शिवरिंग करता है विथ लो टेम्परेचर, राइट. सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ द
मलेरिया और प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो जब ह्यूमन बींग को बाइट करते हैं तो मैंने बताया कि स्पोरोजोइड ह्यूमन बींग की बॉडी में ट्रांसफ़र होते लगभग 20 to 25 मिनट्स फ्रीली स्विम करते हैं ब्लड में, और फिर वो पहुंचते हैं लीवर तक। लीवर के सभी सेल को ब्लास्ट करके उसका नेक्स्ट टारगेट रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड के सेल का जो हीम प्रोटीन होता है, उसमें हीम प्लस ग्लोबिन 2 चीज़ों से बना होता है। हीम है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसके अंदर आयन होता है, एंड ग्लोबिन वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इसमें ग्लोबिन उसका क्या होता है, फूड होता है, और फिर आरबीसी को रप्चर करके उसका एचबी डाउन हो जाता है। सो दैट कंडीशन इज़ नॉन एज द अनीमिया। फीवर होता है, चिल ठंडी लगती है इसमें, एंड मे रिजल्ट इन टू डेथ इफ़ द रिकवरी और इफ़ द मेडिसिन और प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवन टू दैट। पैरासाइट्स में देन मूव इनटू द आरपीसीज आर पिक्ड अप बाय द मॉस्किटो। मतलब यही स्टेज में जब हमारा खून मॉस्किटो थ्रू चूसा जाता है, सक करा जाता है, सो फ्रॉम द ब्लड दिस गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो अगेन मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होके कोई हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन फैलाने के लिए रेडी हो जाती है, राइट। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा के पास ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर algae को लिया गया है कि some of the Protista they are photoautotrophs, means in the presence of light they synthesize their own food, means they contain chlorophyll, then only this thing is possible. The other thing is that they are called the phytoplanktons, means they have phyto means for the process of photosynthesis, they have the chlorophyll like pigmentation within them, and they are planktons or very small microscopic organisms which is freely float on the surface of water. स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है नियर द सरफेस ऑफ ओशन हमें फाइंड आउट होते हैं। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, इट इज़ अ फूड फॉर द जू प्लैंक्टन्स। सो जू प्लैंक्टन्स are the organism which feed on phytoplanktons. Phytoplanktons carried out photosynthesis, release oxygen into the atmosphere, and so for that if we talk about okay, these are the organism which is living in water. So ultimately they increase the amount of oxygen within that. Phytoplanktons it is a play an important role as a food source for many filter feeders. Filter feeders means what, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके माउथ में एक नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है पानी है वो फिल्टर होके माउथ से बाहर निकल जाता है, और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो फूड के फॉर्म में बॉडी के अंदर रह जाते हैं। उसको बोलते हैं फिल्टर फीडर्स, बिकॉज पानी को फिल्टर करके अपने फूड को निकालते हैं, दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट वन इज़ द यूग्लिनोफाइट्स, यूग्लिना ऑर्गेनिजम्स। ये यूग्लिना भी है वो पैरामीशियम की तरह, देयर शेप इज़ लाइक अ स्लीपर, दे हैव द फ्लैजेला फॉर द मूविंग, but they not have cell wall, they have the chloroplast. Okay, so the plant like structure is कि उसके पास chloroplast है, okay, but they have the flagella, so वो moving करते हैं, right, so or they not have the cell wall. So this is the structures of euglena which is very clear in this one diagram. The next one is the diatoms. प्रोड्यूस थीन डेलिकेट सेल वॉल मेडअप ऑफ सिलिकॉन। इसकी जो दीवार होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। मोस्टली ये डाइटम्स का यूज़ टूथपेस्ट बनाने में, पेंट्स ऑन लाइकन्स, लाइसेंस प्लेट्स, डायनेमाइट्स, इन सब के अंदर इनका डाइटम्स का यूज़ किया जाता है। पेंट्स ऑन लाइसेंस प्लेट्स, डायनेमाइट्स एंड टूथपेस्ट के अंदर डाइटम्स आर गोइंग टू बी यूज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका विद इन दर सेल वॉल। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जैसे अलगी बात करें तो रेड algae मोस्टली मल्टी सेलुलर है, और ये स्पेशल रेड कलर के पिगमेंट को बियर करती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट गिव अ स्पेसिफिक कलर, एंड ड्यू टू दिस पिगमेंटेशन इट अलाउ इट टू लाइव अ डीप एरियाज ऑफ अ वाटर, बिकॉज रेड लाइट है वो पेनिट्रेट होती है ज़्यादा वेवलेंथ वाली, सो विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड. The next one is the brown algae, is also multicellular and most are found in a marine environment. Example kelp. Plant like Protist algae की बात करें तो Chlamydomonas, Volvox, C. lettuce.
दिस ऑल आर द ग्रीन एल्गे सम्स आर यूनिसेल्युलर, सम फॉर्म कॉलोनीज, मतलब ग्रुप में रहना पसंद करता है, और उसमें से कई है वो मल्टी सेल्युलर है। ह्यूमन एंड algae का रिलेशनशिप देखा जाए तो कि यूज टू मेक अ न्यूट्रिएंट अगार, मतलब यहाँ algae में से हम लोग क्या बेनिफिशियल चीज़ों को हम लोग एक्सक्रीट आउट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एक्सट्रैक्शन में पहला है न्यूट्रिएंट अगार। हम लोग सेल को, कोई भी प्लांट का जो सेल होता है उसको अगर हमें लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करना है, सो विद द हेल्प ऑफ द अगार जो हम लोगों को algae में से मिलते हैं उसको यूटिलाइज करके सेल्स ग्रो करने में लेबोरेटरी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। अदर देन दैट इंग्रेडिएंट विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम, पडिंग, सैलेड ड्रेसिंग्स, सिरप, ये सभी चीज़ों में बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द थर्ड वन फूड सोर्स के फॉर्म में ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए algae इज़ rich of the nutrient and protein, so it is used as the food also. It releases oxygen from a photosynthesis, so ultimately they clean the environment by giving a fresh amount of oxygen. Algae causes a harm in algal bloom, depletes water of nutrients and oxygen. कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट का कंटेंट अगर पानी में इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर algae है वो फास्ट ग्रो होना शुरू कर देती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द algal bloom। जिससे क्या होता है, algal bloom मतलब पूरा का पूरा पानी का सरफेस है वो algae से कवर्ड हो जाने की वजह से सनलाइट है वो नीचे तक नहीं जा सकता है, इसीलिए दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसको वेजिटेशन है उनको सनलाइट नहीं मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, इनफ अमाउंट में O2 वाटर में नहीं रहेगा, और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो डेथ हो जाएगा उनका। सो दैट इज़ अ algal bloom। सो इट इज़ वी कैन से कि ये जो हमारे लिए है वो क्या है कि नॉन बेनिफिशियल पार्ट हुआ algae का हमारे लिए, राइट। सो दिस इज़ द होल समरी ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। In the next video we will discuss in a detail with each and every parts of the protista। तो मेनली प्रोटिस्टा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ऑटोट्रॉफिक है जो अपना खुद का सिंथेसाइज करते हैं फूड, दूसरे है वो डिकम्पोजर्स टाइप के है, मतलब सेप्रोफाइटिक की तरह जीते हैं, और थर्ड कैटेगरीज में हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। सो वी हैव टू सी ईच कैटेगरीज इन अ डिटेल वन।